हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्यार्थी एजुकेशन। तो आज आम सेट 6 नहीं कि आसचे आमर ओपीएससी ओसीएस प्रिलिम्स ପାଇଁ कि एई सेट रे मु किछटा इंपोर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस नहीं कि आसची जोटा कि आमर करंट अफेयर्स रे भी पड़ी छी। तो बिना टाइम किछ वेस्ट करके सीधा जीवा क्वेश्चंस को। एडी फर्स्ट क्वेश्चन कहै से विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए क्वेश्चन टा कोन पे आसला एबे रिसेंटली हम इलेक्शन कमीशन जो आमर ओटे थिला बॉडी थिला सिलेक्शन कमिटी इलेक्शन कमिश्नर पे से टिके अदल बदल होइछि। तो सेइतमे क्वेश्चन टा आछि देखिया कोन कहिछि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर्स। यस इट इज करेक्ट। जणे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रे एंड दीटा इलेक्शन कमिश्नर रन ठीक अछि। तीन जण जकर सैलरी इक्वल थाए एंड पावर्स भी इक्वल थाए बुझला। सेकंड स्टेटमेंट कोन कहिछि the CEC can be removed by President of India on recommendation of the Council of Ministers। इटा पूरा भूल ओके कहीं प्रेसिडेंट को सकाशे न यांकर रिमूवल टा हमर गोटे सुप्रीम कोर्ट जज कर जेमती रिमूवल हुए इम्पीचमेंट हुए तांकर सुप्रीम कोर्ट जज से हिसाब रे यांकर भी रिमूवल टा हबो बुझला। थर्ड कोन कहिछि द ECI is responsible for conducting elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislative Assemblies only। एटा इनकरेक्ट ओनली जो कहला एटा भूल हैला कहना यांको छड़ा भी ये अलग इलेक्शंस भी करे जेमती कि प्रेसिडेंट तांका इलेक्शन हला वाइस प्रेसिडेंट तांका इलेक्शन हला ठीक अछि। तो एटा भूल हैला आंसर कोन हबो ऑप्शन बी वन ओनली करेक्ट बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन now consider the following statements regarding 128th constitutional amendment bill 2023 ठीक अछि। कोन कहि it proposes the inclusion of a women's reservation for 33% of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies। एटा बिल्कुल ठीक अछि 33% reservations रहउछ Lok Sabha and state legislative assemblies पे okay। then second statement कोन कहि the reservation will come into effect after the delimitation process post 2026 census। एटा भी करेक्ट 2026 रे सेंसस हबार अछि तारे तापर डिलिमिटेशन प्रोसेस हबो तापर जाई कि रिजर्वेशन टा एप्लीकेबल हबो बुझला। द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। थर्ड देखिए द रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब सीट्स एज वेल। एटा भी करेक्ट एटा भी SC ST को भीतर 33% रिजर्वेशन दबो ओके। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो एटा आंसर कोन हबो ऑल 1 2 and 3 आर करेक्ट बुझला। तब संगे संगे नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिए with reference to the National Commission for Scheduled Castes consider the following statement। okay so it is a constitutional body established under article 338 of the Constitution of India। एटा करेक्ट एटा article 338 अंडर रे आछी and it is a constitutional body एटा करेक्ट। then कोन कहि it monitors the implementation of safeguards provided for scheduled caste under the constitution। obviously scheduled caste को पई हिची तो तांकर safeguard से देखिया पड़िबो एठी तो एटा भी करेक्ट। थर्ड कोन कहि it can summon any individual including private citizens to appear before it। एटा भूल एटा जो हितले जो प्राइवेट सिटीजन दिला एटा भूल तांको से अलाउंस टा नाही बट तांकर पावर टा अछि कोन काहा को एक समन एक्सटेंड कर परिवे ना पब्लिक ऑफिशियल्स को समन कर परिवे ठीक अछि नॉट प्राइवेट सिटीजन्स। तो एटा भूल हैला ओके। तो आंसर कोन हबो 1 and 2 ओनली बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statements is correct about the appointment of governors in India। हमारा नुआ गवर्नर आछिन ना से पे क्वेश्चन टा आसीला the governor is appointed by the president on the advice of the prime minister। बिल्कुल करेक्ट पूरा करेक्ट अपॉइंटमेंट होउची प्रेसिडेंट को द्वारा ठीक अछि एटा एंड ऑब्वियसली प्रेसिडेंट नेबो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोटा कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ठीक अछि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स which is headed by prime minister। तो इटी जद लिखा है प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस हमें सेटा ठीक नहीं परिबा दैट ठीक। then the governor's term of office is fixed at 5 years। it is normally 5 years but it is incorrect okay। the term of governor is normally 5 years but it can be terminated earlier at the president's discretion। काइना हमें पढ़ीचे कि गवर्नर होचंती काइंड ऑफ गुटे एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट जदि चाहिबे तांको अपॉइंट करिवे प्रेसिडेंट जो चाहिए तांको रिमूव भी कर दे पारिबे ठीक अछि। तो एटा तांकर फिक्स्ड नाही 5 इयर्स जोटा सेटा फिक्स्ड नाही एंड आल्सो प्रेसिडेंट जतो चेंज हिजबे तो गवर्नर चेंज होबा भी माने हे जानत जेहेतु तांकर लोक थिले सी तो नांती ना सी कोन करिवे
बुझीला तो सेकंड स्टेटमेंट भूल गला थर्ड कौन कहि अ गवर्नर कैन साइमल्टेनियसली होल्ड ऑफिस इन 2 और मोर स्टेट्स एटा पूरा ठीक अछि कोठी मेंशन हिची जिंसटा हमर आर्टिकल कोन लेला मु कहि देबी ना कमेंट कर कमेंट रे को आर्टिकल ले जिंसटा मेंशन हिची कि अ गवर्नर कैन साइमल्टेनियसली होल्ड ऑफिस इन 2 और मोर स्टेट्स ओके तो यार आंसर होची 1 and 3 ओनली ऑप्शन बी करेक्ट बुझेला सांगे सांगे ना वीडियो को पॉज करो तळे कमेंट रे लिखो को आर्टिकल ले लिखा हिची कि गवर्नर कैन साइमल्टेनियसली होल्ड ऑफिस इन 2 और मोर स्टेट्स सांगे सांगे कर दला वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements regarding the Right to Information Act 2005 okay the Chief Justice of India is exempted from the purview of the RTI Act eta pura bhul in 2019 Supreme Court rule kote anla ki Office of Chief Justice of India comes under the purview of RTI Act ठीक है 2019 रे ओके सुप्रीम कोर्ट कहि दला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आछंती आरटीआई एक्ट अंडर रे बुझेला वेरी गुड नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन कहि द एक्ट मैंडेट्स दैट द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जाको मैं पीआईओ भी कहूं मस्ट रेस्पॉन्ड विद इन 30 डेज एटा बिल्कुल करेक्ट they are mandated to respond within 30 days of receipt of an application अब एप्लिकेशन पहुंचला माने से माने 30 डेज भितरे तार आंसर टा देबे रेस्पॉन्स टा देबे बुझियला थर्ड स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज exempted अंडर आरटीआई एक्ट हां ठीक नेशनल सिक्योरिटी हिसाब रे जो भी एजेंसीज आछंती दोज आर exempted अंडर आरटीआई एक्ट तो से माने आसी पारिबे नहीं आरटीआई एक्ट अंडर रे तो कोन 2 and 3 करेक्ट ऑप्शन बी very good next with reference to Citizenship Amendment Act 2019 consider the following statements it grants Indian citizenship to persecuted religious minorities from Pakistan Bangladesh and Afghanistan who entered India before December 31st 2014 yes correct এটা correct हम पाकिस्तान देखि भूल मार दवनी एटी कोन कहिछि religious minorities from Pakistan ए जो एक्ट अलाउ करछि citizenship जो माने माइनॉरिटीज जेमति कि हमर माइनॉरिटीज कोन कोन ना हिंदूज देन आसीगला हमर सिख बुद्धिस्ट्स एंड देन जैन्स पारसीज एंड क्रिश्चियंस एति की जनंकु माने एही रिलीजियस माइनॉरिटीज को अलाउंस अछि ओके स्टेटमेंट 2 द एक्ट इंक्लूड्स मुस्लिम्स एज एलिजिबल बेनिफिशियरीज व्हाट इज आंसर द एटी कोठी मुस्लिम लिखिली ना तो इट इज इनकरेक्ट ओके Muslims are not included as beneficiaries under this act मन रखो ठीक अछि सेमन जोटु भी आस्थंतु बट मुस्लिम ही नथिया दरकार देन थर्ड कोन कहिछि द एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द 6th शेड्यूल एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा करेक्ट द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एरियाज कवर्ड अंडर 6 शेड्यूल्स और स्टेट्स ओके विथ एन इनर लाइन परमिट जो स्टेट्स मानकर गोटे इनर लाइन परमिट अछि तांको अडकू जीवनी एई कांसेप्ट आसीबो नाही ठीक है ये एक्ट आसीबो नाही बुझियला तो 1 and 3 करेक्ट एटा बहुत कम जगह रे मेंशन हेतिबो सेत पई नोट कर दा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फर्स्ट स्टेटमेंट कहिस जे फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट करेक्ट वेरी गुड इट इज करेक्ट कोठी अछि ना आर्टिकल कोथरे मु कहबिनी नै नै म इतर कह दोछि पूर्वटा आंसर करबो को आर्टिकल लिखा है कि गवर्नर 2 और मोर स्टेट्स रे आसी पारिबे गोटी गवर्नर रही पारिबे यार आर्टिकल होची 51A ओके बुझेला ओके सेकंड स्टेटमेंट दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ इनकरेक्ट प्योरली इनकरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल मने रखि दियो कि एफडी जोटा अछंती माने फंडामेंटल ड्यूटी एमाने नॉन justiciable okay and cannot be enforced by courts बुझेला तो एटा भूलेला fundamental duties were incorporated based on the recommendations of the Swaran Singh committee very good it is correct they were added to the constitution based on the recommendation of Swaran Singh committee दमन रखिया को कमिटी हिसाब रे आस्तेला fundamental duties बुझेला तो 1 and 3 correct next now with reference to anti-defection law in India consider the following statements first kon koichi it is contained in the 10th schedule of the constitution is it correct yes it is very good then second koichi a member is disqualified if they voluntarily give up membership of their political party it is correct
ओके जदि वॉलंटरीली से माने गिव अप कर दोचन तांका मेंबरशिप तांका पॉलिटिकल पार्टी रो इट इज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन मन रखिया एबे जाई कि रिवीजन टा करबा कि एंटी डिफेक्ट माने जो मेंबर्स को डिस्क्वालिफिकेशन रो कोन कोन ग्राउंड्स अछि एबे जाई कि हमें सेटा को रिवाइज कर दबा थर्ड कोन कहै छी द डिसीजन ऑफ स्पीकर अंडर द लॉ इज सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू इट इज करेक्ट ओके एटा इंटरेस्टिंग जिंस गोटे अछि गोटे केस थिला किहोतो होलोहान वर्सेस जासिलु एटा केबे थिला 1992 ओके ए केसटा तो एटी सुप्रीम कोर्ट कहितले एटी कि द स्पीकर्स डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू तो एटा करेक्ट ओके एटा मन रखिया एते इंपोर्टेंट न जस्ट खाली इन्फॉर्मेशन पे दे देली बट एटा मन रखियाटा इंपोर्टेंट कि एटा जुडिशियल रिव्यू अंडर रे आसे स्पीकर को डिसीजन उडा ओके सो ऑल थ्री करेक्ट बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statements regarding the EWS कौन ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन is correct okay EWS विषय देख दा it provides 10% reservation in government jobs and educational institution for EWS of all communities okay এটা কোন correct না wrong it is correct reservation applies to all community except for those in SC ST OBC reservations जो मानकर ऑलरेडी अच्छी जोटा कि SC ST किंबा OBC ऑलरेडी अच्छंती एमाने आसीबे नाही EWS रे ता माने जो मन रिमेनिंग जेमति जनरल आसीबे EWS रे बुझिला ओके नेक्स्ट कोन कहै द रिजर्वेशन एक्सीड्स द 50% कैप सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा साहनी केस इट इज अगेन करेक्ट रिजर्वेशन एक्सीड करला 50% कैप टा बट वाज अपहेल्ड एज वैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट The constitution was amended to add articles 15 clause 6 and 16 clause 6 for this purpose. को purpose पे कि ए जो reservation जो increase exceed कर गया 50%. It is correct. 15 clause 6 and 16 clause 6 were added to the constitution via the 103rd Amendment Act. Okay. तो तीनटा को correct. So next question. Consider the following statements regarding the Panchayati Raj System in India. देख दो पंचायती राज सिस्टम विषय जान दो एटी कहि से कोन इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट करेक्ट ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट पंचायती राज सिस्टम टा पार्ट 9 भितर आसुची कोथरे ऐड कराइतले को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऐड कराइतले एटा ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बुझिला द सेकंड कोन गइची द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग पंचायत इलेक्शंस अगेन इट इज करेक्ट कहना स्टेट इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट इलेक्शंस फॉर लोकल बॉडीज बुझेला लोकल बॉडीज एंड पंचायत आर लोकल बॉडीज तो इट इज करेक्ट थर्ड कौन कही पंचायत इन द 5th शेड्यूल एरियाज आर गवर्न्ड बाय द पैसा एक्ट कौन ना पंचायत एक्सटेंशन लिखि दउची पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट केबे ना 1996 okay is it governed yes it is the panchayat joda ka option scheduled area re those are governed by the paisa act 1996 the tinta ka statement correct bujhela next question which of the following statements about the right to privacy is correct now it is a fundamental right under article 21 of the constitution yes of course article 21 right to privacy asuschi to eta thik hela এটা কোঠু আসছিলা না কেস পুট্টস্বামী वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केबेरा ना 2017 सेकंड कोन कहि द राइट इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट एटा इनकरेक्ट राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट ओके इट इज नॉट एब्सोल्यूट and can be restricted under reasonable circumstances like public safety under रे एटा को कर्व कर दिया पारे ठीक है कर दी पारंती तो एटा भूलेला सेकंड स्टेटमेंट थर्ड को कहि दैट पुट्टस्वामी जजमेंट एस्टैब्लिश द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट एबे ही कहली पुट्टस्वामी केस ओके तो एटा करेक्ट तो 1 and 3 करेक्ट वेरी गुड नेक्स्ट नाउ विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years तो बढ़िया कथा कहि एटा तो पूरा करेक्ट कथा कि एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड एवरी 5 years थर हुए ठीक अछि को आर्टिकल अंडर ऐसे फाइनेंस कमीशन हमरा आर्टिकल कोथरे संगे संग कमेंट करिया है ना ओके जल्दी कर देला वेरी गुड
करना कर संगे नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है देन सेकंड कहिछि इट्स recommendations on the distribution of taxes between the center and states are binding recommendations को binding taxes distribution ऊपर बिल्कुल नहीं एटा भूल the finance commission जो recommendations हल्ला those are only advisory okay कौन ना advisory खाली advise कर परिवे in nature but not binding on the government however they carry significant weight ठीक है तांकर जो एडवाइसेस भी बहुत काम रे आसे हमर फिस्कल प्लानिंग रे ठीक है फिस्कल प्लानिंग रे बहुत काम रे आसे यांकर एडवाइसेस कहार फाइनेंस कमिशन रो ओके बट दोज आर नॉट बाइंडिंग हम खाली छोड़ देबा ताटू किछटा इनपुट्स नहीं जिबा कि न भी नहीं परिया एडा बाइंडिंग ठीक है देन कोन कहै द 15th फाइनेंस कमिशन इंट्रोड्यूस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स फॉर स्टेट्स एटा करेक्ट 15th फाइनेंस कमिशन कौन करले ना गोटे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स आनले कहा पई ना स्टेट्स पई जेमते कि इन एरियाज लाइक कोन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स ठीक है को सेक्टर्स आनले पावर सेक्टर आउ को एरियाज एनहांसिंग एक्सपोर्ट्स आउ कोन जेमते सस्टेनेबल डेवलपमेंट हला ओके एई सब जिंस रे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी दबा को कौन को आइछ इंट्रोड्यूस कराई छै जिंस तो 1 and 3 करेक्ट बुझियला नेक्स्ट कमेंट करो को आर्टिकल अच्छी एटा कौन कहछि कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड द यूसीसी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट अंडर डीपीएसपी यस द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आर्टिकल 44 रे ही आछि यूसीसी सेकंड कहछि गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट फॉलोज द यूसीसी ना ता भूल काहे की भूल ना एबे रिसेंटली उत्तराखंड रे एक्सेप्ट हे जाई छी यूसीसी तो है ना दीटा स्टेट रे हमर यूसीसी फॉलो होउची गोवा रे होउची उत्तराखंड रे भी होउची बट गोवा रे पोर्तुगीज सिविल कोड हिसाब रे चलछ तांकर जो गोवा सिविल कोड अछि सेटा एक्चुअली पोर्तुगीज जतले थिले सेटा बना हेतला तो सेतलडू यूसीसी चलछि सेठी ठीक अछि बट इंडियन पार्लियामेंट जतले स्टार्ट करछि एटा को तो उत्तराखंड हमर फर्स्ट स्टेट हे जिवो ओडे इंडियन गवर्नमेंट ये करिया माने कोन कहबी पार्लियामेंट एक्सेप्ट करिया ओके द थर्ड कौन कही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा भी भूल कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार नहीं गोटे ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पास जदी हो जाए पार्लियामेंट रे यूसीसी एक्सेप्ट हो जीवो तो 1 ओनली करेक्ट एटी ऑप्शन टिके भूल अछि एटा को नहीं जीवा 1 ओनली करेक्ट ओके नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिलिमिटेशन कमिशन विषय हम टिके देखिए It could say the Delimitation Commission is a constitutional body established under Article 82. ठीक है Article 82 अंडर अच्छे बिल्कुल किसी नहीं बाजे जिनसा एटा constitutional body ही नुए statutory body एटा मुझे ला एटा उड़े statutory body मन रखो हला ये Parliament enact करते ला Delimitation Act मन बका Delimitation Act सही यार सब रहा है constitutional code ही mention नहीं बेकार जिनसा भूल एटा The latest delimitation exercise in India was conducted in 2002. Correct. 2002 रे उटे nationwide delimitation program हेतिला. ठीक है 2001 रा census को नहीं हला. Next, however, a freeze on delimitation is in place until after the 2026 census. 2026 रे जो census हबार अछि सती जाई एटा को फ्रीज करी रखा है माने एई प्रोसेस ता जोडा हेई जाई छि एया हिसाब रे ना चाली छि. एटा करेक्ट. थर्ड कोन कहै छि The delimitation of constituencies in Jammu and Kashmir was carried out after the abrogation of Article 370. Very good. Is that correct? Following the abrogation of Article 370, delimitation was carried out. Koti, Jammu and Kashmir under Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Okay, that is correct. 2 and 3 only. Now consider the following statements regarding the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006. एत्ते लंबा मन रखियार नहीं मन रखिया पड़िबो ऑब्वियसली बट आमे सेडो छोट रखो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एफआरए ओके तो कौन कोई स्टेटमेंट से छी द एफआरए एम्स टू रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट फॉरेस्ट राइट्स इन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट एरियाज Of course, forest rights भी सर कोच द forest areas रे करावो ना forest rights दिया वो that is correct. Second कौन है it provides for community forest resource
राइट्स बट एक्सक्लूड्स इंडिविजुअल ओनरशिप एटा भूल एटा पूरा भूल कौन पाई ना एक्ट कौन कहूँ बोथ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स ओके फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स भी ओवर फॉरेस्ट लैंड एटा अच्छी इनक्लूड करुच्ची बोथ ठीक अच्छे एटा भूल गला थर्ड कौन कही द ग्राम सभा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लेम्स अंडर दिस एक्ट it is correct the gram sabha actually is the primary authority responsible for initiating and verifying claims under the forest rights act ठीक है primary authority तो 1 and 3 correct बुझेला तो आज वीडियो पे हमें एतिटा क्वेश्चंस नहीं आसले पॉलिटी रिलेटेड आशा करछि आपण मन क्वेश्चन आउ तार एक्सप्लेनेशन आंसर्स भल लागिथिबो जदि भल लागिछि लाइक कर दियंतु वीडियो को एंड जदि अधिक बहुत भल लागिगला देन कमेंट भी कर दियंतु कि हां सर भल लागिला मुझे खुशी हेबी मोटे एनकरेजमेंट मिल नुआ नुआ वीडियो जाना को तो यहाँ था पॉलिटी उपर ये वीडियोटा सेट एंड आउ मुझे कही रखुच्छी आम वेबसाइट जाकि वीकली करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ी पारे जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे एंड मोस्टली से क्वेश्चन आसूँ ओके डिफरेंट एग्जाम्स तो निश्चित रूप पढ़े वीकली करंट अफेयर्स हो कि मंथली करंट अफेयर्स हो मंथली करंट अफेयर्स भी आमर मिलूँ वेबसाइट लिंक आमर डिस्क्रिप्शन अच्छी देखा नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस